Welcome students to the course on the principal Upanishads. Today we'll discuss lesson 12 Mundaka Upanishad, Mundaka 1, section 1. As you remember, we are in module 2 now. In lesson 11, we completed Mandukya Upanishad. Now for next 5 lessons, we are going to discuss Mundaka Upanishad. There are 3 Mundakas, each Mundaka having 2 sections. So today's class, only Mundaka 1 and section 1. Introduction. Mundaka Upanishad. The Mundaka Upanishad belongs to the Atharva Veda and has 3 chapters, each of which has 2 sections. The name is derived from the root mund, to shape, as he that comprehends the teaching of the Upanishad is shaped or liberated from error and ignorance. The Upanishad states clearly the distinction between higher knowledge of the Supreme Brahma and the lower knowledge of the empirical world. It is by this higher wisdom and not by sacrifices or worship that one can reach Brahma. Only the sannyasin who has given up everything can obtain the highest knowledge. मुंडकोपनिषद अथर्व वेदर अंतर्गत अटे. मुंडन अर्थात लंडा हेबा एही उपनिषद सेही मानक पई जे माने ब्रह्म ज्ञान पाइबा को साधना करछन्ती. एही उपनिषद सौनक ऋषि अंगिरस ऋषिंक ठारू पाइथिले. अंगिरस अथर्वांक ठारू पाइथिले. एही उपनिषद रे 3 कोटी मुंडक बा अध्याय अछि. प्रति मुंडक रे 2टी खंड बा विभाग. एही उपनिषद र पर ओ अपर उभयर ज्ञानदायिनी सेही ब्रह्म विद्यार वर्णन अछि. प्रथम मुंडकर द्वितीय खंडरे यज्ञर महिमा वर्णन कराइछि. आत्मा को परमात्मांक ठारे हवन करदिवा मध्य आत्मयज्ञ. किंतु अग्निहोत्रर महिमा मध्य किछि कम नुहे. द्वितीय मुंडकरे ओंकार को धनुष और तप को बाण कुहाଯାଇଛି. तृतीय मुंडकर प्रथम खंडरे परमात्मा विषय उल्लेख अछि. तप ही ईश्वर प्राप्तिर प्रधान मार्ग अटे. इन्वोकेशन शांति पाठ. ओम भद्रं कर्णोभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरैरङ्गैस्तष्ट वाङ्ससस्तनुर्भिव्यसेम हि देवहितं जदायः. ओम शांति शांति शांति. हे देवगण, आंभे माने कर्ण द्वारा भद्र कथा शुणु, नेत्र द्वारा आंभे माने सर्वदा उत्तम दृश्य देखु, आम शरीर समस्त अंग प्रत्यंग सुदृढ़ और सुपुष्ट हेउ, आमर आयु भगवान को कार्य लगी रहू. May we, O gods, hear what is auspicious with our ears. O ye, who are worthy of worship, may we see with our own eyes what is auspicious. May we enjoy the life allotted to us by the gods, offering praise with our bodies strong of limbs. Invocation. ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु. ओम शांति शांति शांति. सबु दिगरे विस्तृत ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव आंभर कल्याणकारी हुंतु. विश्वर समस्त ज्ञानीगण तथा समस्त पुष्टिकता सर्वज्ञ सूर्य आंभर कल्याणकारी हुंतु. अरिष्टर नाश निमंते चक्र सदृश शक्तिशाली गरुड़ बा सर्वत्राता आंभर कल्याणकारी हुंतु. बुद्धिर स्वामी बृहस्पति मध्य आंभर कल्याणकारी हुंतु. आंभ मानकर आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक त्रिता पर शांति हो. May Indra of increasing glory bestow prosperity on us. May Pusan, the knower of all, bestow prosperity on us. May Taksha of unobstructed path bestow prosperity on us. May Bruhaspati bestow prosperity on us. Om, peace, peace, peace. Mantra 1, Mundaka 1, section 1, Prathama Mundaka, Prathama Khanda, the tradition of Brahma knowledge. ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संभवुवा. ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संभवुवा विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठा मथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह. सगुण ब्रह्म बा ब्रह्मा देवतामानक मध्यरे प्रथमे संभव हेले. विश्वर सृष्टि सर्जनकारी समस्त लोकर पालन करता सेही ब्रह्मा ब्रह्म विद्या को जहा कि समस्त विद्यार आश्रय स्थल तांकर ज्येष्ठ पुत्र अथर्वांग को कहिले. ब्रह्मा arose as the first among the gods, the maker of the universe,
the protector of the world. He taught the knowledge of the Brahma, the foundation of all knowledge, to Atharvan, his eldest son. मंत्र 2 मंत्र 2 अथर्वेण जांग प्रवदेत ब्रह्मर्थबातांग पुरवाच अंगिरे ब्रह्म विद्यायां स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारद्वाज अंगिरसे परावराम ब्रह्मा अथर्वंकु जो ब्रह्म विद्या कही अथर्वा ताहांकु पुरातन काल में अंगी नामक ऋषि को कही अंगी यही विद्या को भरद्वाज वंशीय सतवह नामक ऋषि को कहले तापरे यह परंपरागत शिष्य को शिष्य हुई जगत विदित है. That knowledge of Brahma which Brahma taught to Atharvan, and Atharvan in old times told Angiras, he in his turn taught to Satyavaha, son of Bharadwaja, and the son of Bharadwaja to Angirasas, both higher and lower knowledge. Mantra 3 Sonaka Habai Mahasalongirasang Vidhivadu Pasannaha Prapachha कस्मिन्नु भगवो विज्ञते सर्वमीदं विज्ञातं भवतीति. सुनक ऋषिंकर पुत्र सौनक बहुत प्रसिद्ध थिले. से विशाल यज्ञशाला करथिले जेउथरे वेद विधि अनुଯାयी होम यज्ञ जगत कल्याण निमित्त करा जायतिला. सौनक विख्यात ऋषि अंगिरसं को जाई साक्षात कले पचारिले भगवान काहाको जानिले समस्त जगतर ज्ञान तत्व जानि हेबो. सौनक द ग्रेट हाउसहोल्डर ड्यूली अप्रोच्ड Angiras and asked, through what being known, Venerable Sir, does all this become known? Mantra 3. Continue. Brahma, the creator of the world and its governor, arose by the exercise of his own choice. His rise is unlike the birth of individuals, which is determined by past deeds. Brahma here is Hiranyagarbha, the world soul. Avidya or Aparavidya, concerned with the things perishable, and Vidya is the Paravidya, dealing with the imperishable being. Higher knowledge is concerned with the understanding of the nature of the supreme good, Nishreyasa, and lower knowledge deals with discipline relating to the instrumental values. Mantra 4, Mantra 4. Two kinds of knowledge. तस्मै स उवाच द्वे विद्या वेदितव्ये इति हस्म जतब्रह्मविद वदन्ति परा चैवा परा च. सोनक ऋषि को अंगिरस कहले दुईटी विद्या जानिबार योग्य अटंती जहाँकि लोक प्रचलित ब्रह्मज्ञानी माने यहाँ परा विद्या और अपरा विद्या बोली कहती. टू हिम ही सेड टू काइंड्स ऑफ नॉलेज आर टू बी नोन as indeed the knowers of Brahma declare the higher as well as the lower. The lower knowledge also aims at knowledge of the highest reality, though in a partial or imperfect manner. Mantra 5. Mantra 5. Tatra para ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषमिति अथ पराजया तदक्षरमधिगम्यते. अपरा विद्या है सांसारिक अर्थात लौकिक. ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद आदि चारि विद्या अपरा विद्यार अंतर्गत. वेदर कर्मकांड और ज्ञानकांड मध्य 6टी वेदांग अंतर्भुक्त से शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद ज्योतिषी पराविद्या ही श्रेष्ठ ज्ञान जहाँ ज्ञानकांड लिखी. Of this, the lower is the Rigveda, the Yajurveda, the Samaveda, and the Atharvaveda. Phonetics, ritual, grammar, etymology, metrics, and astrology. And the higher is that by which underlying is apprehended. Mantra 6, Mantra 6. The imperishable source of things unperceivable. Mantra 6. Jatta adresyamagrahya magatra mavarna chakyusutrang tadapaanipadam nityang vibhung sarvagatang susukmang tadabhyam jat bhuta joning paripasyanti dhira. এই মন্ত্রে পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বরଙ୍କର ନିରାକାର ସ୍ୱରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି. ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଗୋତ୍ର ବା କୁଳ ନାହିଁ. ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣଗତ ଭେଦରୁ ସର୍ବଦା ଅତୀତ. ସେ ନେତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଏବଂ ହସ୍ତପଦ ଆଦି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିତ. ସେ ସର୍ବଦା ନିତ୍ୟ. ତାହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀଜନ ସର୍ବତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତି. ମନ୍ତ୍ର 7. That which is ungraspable, without family, without caste, without sight or hearing, without
hands or feet, eternal, all-pervading, omnipresent, exceedingly subtle, that is the undecaying, which the wise perceive as the source of beings. Mantra 7, Mantra 7. जठर्न नाभिः सुजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् सम्भवति हविस्वम् जेपरि बुढ़ियाणी निजर नाभिरु जाल बाहर करे पुणी नाभि भितर को आकर्षण करिनिए यथा जेपरि पृथ्वी रे औषध वृक्ष लता आदि जात हुअन्ति जेपरि जीवित मनुष्यर लोम केश आदि जात हुअन्ति अक्षर ब्रह्मंग ठारू विश्व जात हुए मंत्र 8 मंत्र 7 कंटिन्यू As a spider sends forth and draws in its thread, as herbs grow on the earth, as the hair grows on the head, and as the body of a living person, so also the imperishable arises here, the universe. Mantra 8, Mantra 8. Tapasa चीयते ब्रह्म ततन्नमभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यं लोका कर्मसु चामृतम तपस्या द्वारा अर्थात संकल्प द्वारा ब्रह्म बुद्धि प्राप्त हुए ब्रह्म बुद्धि हुए अन्न जात हुए खाद्य प्राण जात हुए प्राणरु मन जात हुए मनरु सत्य पंचमहाभूत विभिन्न लोक जात हुअन्ति कर्मर पुणी कर्मफल जात हुए बाय कंटेम्प्लेटिव पावर ब्रह्म एक्सपैंड्स फ्रॉम दैट food is produced from food life thence mind thence reals 5 elements thence the worlds these the rituals in the rituals immortality mantra 9 mantra 9 जह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते जे समस्त तत्व जानती समस्त तथा जगत विस्तृत भाव बाहर भीतर को जानती ज्ञानमय तांको ही अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ नाम रूप खाद्य मध्य जात हुए he who is all knowing and all wise whose austerity consists of knowledge from him are born this brahma or hiranyagarbha name shape and food. Summary of Mundaka 1 section 1 which constitutes lesson 12 summary. सोनक ऋषि पचारि जे काहाकू जानिले सबु किछि जानि हुए एहार उत्तर रे समस्त जगतर परम कारण परम ब्रह्म परमात्मा ठारू जगतर उत्पत्ति कही संक्षेप रे एही कथा बुझाई दिया गला जे सेही सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ समस्तकर कर्ता धर्ता परमेश्वर को जानि नेबा परे ही सबु किछि ज्ञात हो जाए. Brahma, in relation to the cosmos, is the personal God who is self-conscious and contemplative. All the products such as Anna, Prana are working towards immortality, which is the goal of creation. The Brahma, who is without beginning and end, who is of the form of the indestructible world, is apparently transformed into objects, and this is the process through which the creation takes place. We'll repeat. Brahma, in relation to the cosmos, is the personal God who is self-conscious and contemplative. All the products such as Anna, Prana are working towards immortality, which is the goal of creation. The Brahma, who is without beginning and end, who is of the form of the indestructible world, is apparently transformed into objects, and this is the process through which creation takes place. So the creation is from Brahma. So these are the references. Thank you for listening.